Hi students. So in the last class we discussed about the brief presentation and we stopped it at the scheme for the management of the bridge presentation. In the last class we discussed about the varieties of bridge presentation, the causes, and this diagnosis, how we will diagnose a bridge presentation. Then we moved to the scheme for the management of the bridge presentation. So in that we discussed about how we will what are the different methods to manage this bridge presentation. Okay, so in that we specified about ECV, that is external cephalic version. So spontaneously the way version happens in pregnancy as the term reaches. But if if the version has did not happen, then that may lead to bridge presentation. So uh, manually we can do this external cephalic version. So we are going to see in detail about this procedure. So the external cephalic version, it is done to bring the favorable cephalic pole in the lower pole of the uterus. You know, in breech presentation, the baby buttocks will be in the lower pole of the uterus. And for when we do the external cephalic version, our aim is to bring the cephalic pole to the lower pole of the uterus, isn't it? Then here this ECV, the success rate of ECV is 60 percentage, and it is done if the gestational age is more than 36 weeks. So we should perform the late aversion is difficult, but less chance of reversion. Effective management of any fetal complication and use of tocolytic reduces the difficulties. So even if it is difficult, but there is once if we are in the late version, as the 30 close after closing the 36 week, if we are doing the cephalic version, then there is less chance that it will revert again. Understood? So it was buttocks presentation, okay, breech presentation. So what we did, we have performed ECV and we brought the cephalic pole to the lower pole of the uterus. But after doing this, we can just imagine that after that also there is chance for the spontaneous version. What can happen? The cephalic pole can go to the upper pole and same as earlier, it can come the same likewise. But if we are performing the external cephalic version at the late period, then there is less chance of reversion and the fetal complications can be effectively managed. And here, the use of if we are using the tocolytics, then associated difficulties can be reduced. Okay. Next, the contraindications. In all cases, we are not supposed to perform this. If the mother is having antepartum hemorrhage like placenta previa or abruptio placenta, in those cases, we are not supposed to do ECV. Then fetal causes like hyperextended head or the baby weight is more than 3.5 kg, if the baby is dead or IUGR, in all these cases, ECV is contraindicated. Then in multi-pregnancy, malformation of uterus, if the computer tomography of the baby has come abnormal, if there is previous history of previous cesarean delivery, some obstetrical complication like if the mother is having severe preeclampsia, mother is obese, she's elderly, primary gravida, if she has bad obstetrical history. In all these cases, we cannot do, and moreover, in the RH incompatibility also, we cannot perform ECU. So these are the contraindications for the external cephalic version. Next, we are moving on towards next we are moving on towards the how the successful version can happen in which cases. In the complete breach, the non-engaged breach, in sacroanterior position if the liquor is enough, and the non-obese patient. In these cases, if it is a complete, you know what is complete breach, how the baby will be positioned. If it is a complete type of breach, and if the breach, if it is non-engaged, and if it is a SOA position, and amniotic fluid is enough, it is adequate, there is no oligo or polyhydramnios, and the mother is not obese. In all these cases, the version will be successful. The possibility is more for the success. But whereas if the type of breech presentation is frank breech and the liquor is less and the baby is big,
or the mother is obese, or the uterus is irritable, the cord is short, and the uterus is having some malformation. In all these cases, the version will be a failure. Okay, so we should, before doing the version, we should identify which type of breech presentation is there, and whether there is not adequate amount of amniotic fluid, whether there is short cord or long cord, if there is any abnormal uterine malformation. All these things we are supposed to confirm. Next, the advantages. So, what are the advantages of external cephalic version? So, first one is, while by doing this, we can reduce the incidence rate of breech at the term, and we can reduce the breech delivery incidence, and even the cesarean delivery can be reduced. What are the dangers? So, due to ECV, due to external cephalic version, premature labor can happen, premature rupture of membrane, placental separation, cord entanglement, then fetal-maternal bleeding, amniotic fluid embolism. These all can be the complication of ECV. Okay, premature labor, premature rupture of membrane, placental separation, cord entanglement, which means the cord will make it has the possibility that cord will be that can come around the neck. Okay, and fetal-maternal bleeding, then amniotic fluid embolism. These are the complications of external cephalic version. Now the procedure. Okay, so here we will administer the tocolytic agent. Example is terbutaline, that is 0.25 microgram, or if we are using isosupreme, then 50 to 100 microgram intravenously. Then the sonography has to be done, so as we have to confirm the diagnosis, that see whether the liquid is adequate or not. Then when we do the NST, non-stress test, it should be reactive. Bladder has to be emptied. We have how the patient should be positioned: supine with the shoulders slightly raised, thighs slightly flexed, and abdomen fully exposed. Okay, supine position, shoulders will be slightly elevated, thighs flexed, and abdomen fully exposed. Then fetal presentation, position of the back and limbs, everything check again. Then we will auscultate the fetal heart rate. Okay. Now, the first step is, imagine here, this is the position of the baby. It is a breech presentation. The podalic pole is situated at the lower pole of the uterus, but cephalic, the head is at the upper pole. So now our aim is to bring this cephalic pole to the lower pole. Isn't it? So now what we'll do, there is one movement, forward roll movement. Forward means towards the front. So what we will do, mobilize the breech using both hands towards which back of fetus lie. Okay, so it is external cephalic version. So both the who is performer who is going to do this procedure, that the both the hands will be kept on the patient's abdomen, mother's abdomen. Okay, so it is manual method, forward walk method. Here both the hands will be placed towards the back of fetus line. Okay, now the right hand will be holding the podalic. Here you can see, using the right hand has grasped the podalic pole, whereas the left hand, using the left hand, the head is being grasped by the procedure, the performer. Okay, now, step two, okay, what the left hand person, the where the left hand is kept, it was kept at the where it was kept. You can just see the left hand was kept at the. It was grasping the head. So the left hand, what they will do, they will exert the pressure to head to push, exerted to head to push the breech, and the right hand the pressure in opposite direction to guide. You can see this arrow mark. So the cephalic pole was here. So it is being uh, force has been applied in order to pressure has been applied in order to change the lie. So intermittent pressure is given till the lie become transverse. So first it was in longitudinal lie, then likewise it was there. Now we have changed it to the transverse line. Again we are supposed to check the fetal heart. Understood? So once again, the step one we will see, the left hand, it was using the left hand, head was grasped, and the right hand the podalic pole was grasped. So then what we are supposed to do, the left hand is exerted head to push breech. Okay, whereas in the right hand the pressure in the opposite direction to guide the vertex, and the intermittent pressure we are applying till it becomes a transverse line. Okay,
So the cephalic pole has come to here and podalic pole has rise to this level. So it is a transverse line. And after this, so from the longitudinal line, we have drawn to the transverse line. So after this moment, we are supposed to check the fetal heart rate of the baby. Okay. Now, step 3, what we are to do, we have to change the hands. Okay. So one hand was kept here and another hand was kept here. Now we have changed the hands. The right the right So the intermittent pressure will be exerted till the head is brought to the lower pole of the uterus. So slightly by applying the pressure, the baby is moved like this. Okay, it was transverse line, head has been brought down, so the buttocks has been reached at the upper pole of the uterus. Understood? So this is the external cephalic version. Understood? Now, so it is a forward roll method. Here we are doing the forward roll method. We are forwarding from here up in front. We are forwarding it like this. Okay. Then we have changed the hand, and now again it has come to the longitudinal line. Now again we are supposed to check the non-stress test, and it should be reactive. If there is any bradycardia, we have to wait for 10 minutes so that it will settle down. If the bradycardia, the baby's fetal heart rate is reduced, bradycardia is there, then we have, if persist, we can doubt that may cord entanglement may occur. Okay, so the reversion is done. We have to revert it back. Cord entanglement means cord around the neck. Cord has entangled. Now, patient is observed for 30 minutes. Okay, then we have to see whether the FHR is settled down or not. We have to also we have to note for the vaginal bleeding and even the signs of premature rupture of membranes. This we have to no. Patient is advised for the follow-up, and if the patient is having any complaints like vaginal bleeding or pervaginal leaking, or if the mother, so she has to do the follow-up. And also, if she is RH negative, so after this procedure, we are supposed to give 100 microgram anti-D immunoglobulin in order to avoid the RH incompatibility to the baby. Understood? So these are the external cephalic version. Now, if the ECV has failed, or we could not we are not able to perform the ECV because of the contraindication. Earlier itself we dealt about the contraindications to whom this procedure has not should not be done. So in these cases, what we are supposed to do, we have to do the usual checkup. We know that it is the breech presentation, but we have to do the usual checkup. We have to assess for the maternal age. We have to assess for some many complicating factors. We have to assess the baby size, pelvic capacity, everything we have to assess. And then clinical assessment of pelvis. So we have to know whether it is contracted pelvis or not, because if it is contracted pelvis, we cannot proceed to for the vaginal delivery. We have to perform cesarean only. So we have to finalize it. Is there any complicating factors, or there are any factors in which the vaginal delivery cannot be performed? So we have to see that, because one management was ECV, but it failed. We performed ECV, but it failed, or it was contraindicated. For that patient, we will not be able to do the ECV. So in that case, we have to usual checkup has to be done, and we have to find out any factors is present or not. So whether we, in the case if we cannot do the vaginal breech delivery. Okay. Now, in which case we can do the elective cesarean section. In almost 15 to 50 percentage of cases, we can perform elective cesarean section. And if the baby is more than 3.5 kg, then the vaginal delivery will be difficult. So we will go for the elective cesarean section. And stargazing fetus. Stargazing. What is stargazing? Stargazing means looking towards the star. You know, the star is present on the sky. So stargazing means the baby is looking toward the star. Means you can just imagine how the position of the attitude. You can see that. So stargazing fetus means hyper extension of the head. In order to see the star, we need to elevate our neck, isn't it? So it is stargazing, but normally it should be flexed. But if it is stargazing fetus, it means that it is extension of the fetus.
fetus. In this case, we cannot perform vaginal delivery, so elective cesarean section has to be done. Then, if it is a footling presentation, that is also a main complication where we cannot perform the vaginal delivery, we have to go for the cesarean section. Then, if it is contracted pelvis, then also we cannot perform vaginal delivery. And if it is a severe intrauterine growth retardation, in all these cases, we have to plan for cesarean section. Okay. Now, where in which cases the vaginal breech delivery can be done? If the baby weight is average, then we can perform vaginal breech delivery, and it is flexed. It is not stargazing fetus. It is flexed fetal head. Then the pelvis is adequate. There is no any other complications, and LSC is facility available. But we have to see for in any emergency condition, we may have to go for emergency cesarean section. Here we said about elective pre-plan. Breech delivery can be performed, but in case any emergency has occurred, suddenly the baby has gone to bradycardia, or fetal heart, there is some variation in the fetal heart rate, or the mother has gone to distress, or the baby has gone to distress. So emergency cesarean has to be done. So that facility should be there in the in the hospital. Okay, and experienced obstetrician should be there. Understood. So that was about the external cephalic version. So we dealt about one management, that is external cephalic version. Then we dealt about the cesarean section. Okay, so these two management for the breech presentation. Now we will see the management of budget. We discussed about external cephalic version. That was one option of management, and another option was cesarean section. That too we have discussed. Now we will see for the vaginal breech delivery. So, in vaginal breech delivery, you know the labor has been divided into different stages. In the first stage, we have to perform vaginal examination. Why we are doing vaginal examination? To find out see the whether onset of labor and the pelvic adequacy, and we have to see whether the membrane has ruptured or not. We have to exclude the possibility of cord prolapse. Okay, so this all have for all this purpose we have done vaginal examination. Then IV line has to be started, RL solution, oral intake has to be avoided, and blood has to be sent for the group and cross matching. Adequate analgesia should be given. Frequently we have to monitor the fetal heart rate. We have to assess the fetal status also, and even we have to maintain the partograph. Progression of labor has to be documented. Then oxytocin infusion if needed for the augmentation of labor. And if there is any during the first stage of labor, if we are feeling there is arrest of labor, the labor is not progressing, okay, and if the FHR rate is not reassuring, and if there is cord presentation of cord prolapse, then definitely we have to move on to the cesarean section. Understood? Now, in the second stage, spontaneously everything can happen in the second. Normally, the delivery of the baby is happening in the second stage of labor. So that without any complication, the spontaneously the delivery of the baby can happen in 10% of cases. But in some cases, assisted breech delivery is needed. Okay, for that, we need assistance from the beginning to the end. Then breech extraction. Okay. The part means, for the while studying the mechanism of labor, we study first the delivery of the buttocks, and delivery of the shoulder, then delivery of the head. So the delivery of buttocks is easy; it will come easily. But in some cases, there are possibility that we may find difficulty in the delivery of shoulder or the delivery of the head. So in that case, we have to extract the breech, and it should be extracted by the experienced obstetrician. Okay. Now indications when we have to do this breech extraction, delivery of the second twin. What is EPV? Internal podalic version. We studied about external cephalic version. Here it is internal. So external cephalic version was done, both the hand was kept over the abdomen externally. But in this case, internal podalic version, one hand will be inserted, introduced into the vagina. Understood? So in detail, we will learn in another class regarding the internal podalic version. So if it is a multiple pregnancy, one baby has delivered, it was in normal lie and it got delivered. But if the second twin, it is in some, it is in breach. In that case, internal podalic version we can do.
Okay, now if it is a cord prolapse or extended legs, in all these cases, we have to perform breech extraction. Understood. Spontaneously, it can happen without any help. Spontaneously, the delivery can happen. In some cases, we need assistance, that is assisted breech, and in other cases, breech extraction. In that part, we need the breech will the baby will be extracted by the obstetrician. Okay, baby or any part of the baby. Next is, now we are going to talk about the assisted breech delivery. For spontaneous, no problem. Spontaneously, the buttock, shoulder, and head will be delivered. Next is assisted breech delivery. Okay, I will go in detail about that assisted breech delivery. It means the name itself indicates that assistance is needed. Assisted breech delivery. Now, before this procedure, some points we have to remember. We have to keep ready something, that anesthetist should be available. There should be one assistant. There should be instruments which should be has to be ready. Suture has to be ready for the episiotomy. Obstetrical forceps has to be kept ready, and all the necessary equipments has to be kept ready to resuscitate the baby and neonatal. So all this thing has to be kept ready beforehand. Okay, this is before doing the assisted breech delivery. Okay. Now, principles. There are some principles to be followed. Never to rush. We should not rush anything. Okay, because generally we have to do every procedure. Never to pull from below, but push from above. We are not supposed to pull the fetus from. We never to pull from below and push from above. Always keep the fetal back anteriorly. Means the fetus, the baby should be in front. Just imagine the baby is in front position, so the fetal back will be anteriorly. We will be able to see the fetal back. That in that position only the baby has to be kept by assisted breech delivery. Okay, we should not we should not be in very we should not do we should not rush. We should not pull from below or push from the above. And every time the baby has to be kept her back anterior. Okay, now the steps. The first thing is the women should be kept in lithotomy position. Okay, this position is tilted laterally, using a wedge under the back to avoid aortic compression. So, in order to avoid the compression over the aorta and inferior vena cava, the mother, instead of she will be in lithotomy position, but slightly she will be tilted laterally. Okay, so as to avoid the pressure or compression over the aorta and inferior vena cava. Bladder has to be emptied, antiseptic cleaning has to be done, and epidural analgesia or lignocaine infiltration has to be done. Episiotomy has to be done. Okay, then patient has to be. We need the effort from mother also. The patient has to encourage. We have to encourage the mother to bear down as it ensure the flexion of the head and the safe descent. Okay, so lithotomy position with slightly laterally tilted. Bladder should be empty. Proper aseptic technique has to be maintained, and we have to give epidural analgesia or a parenteral block infiltration in episiotomy, and bear down effort we need from the mother. Now, so first, delivery of the drug. So one thing we need to keep in mind, that is no touch technique, no touch policy. Okay, no touch means we are not supposed to touch the baby. Okay, till buttocks and legs are delivered. So you know what will be the first part delivered in the mechanism we study. In three parts it has been divided: delivery of the buttocks, then delivery of the shoulder, and delivery of the head. So the first will be coming the buttocks and legs. Okay, so till until the buttocks and legs comes, we should not touch. No touch policy has to be maintained till buttocks and legs are delivered and the trunk slips up to the umbilicus. Now, so buttocks and legs will be coming, okay, and after that, what happens? The trunk will also come up to the umbilicus. That is happening normally. That will happen, not touch policy. Okay, now, after the trunk up to the umbilicus is formed, okay, imagine
The buttocks has delivered, legs has delivered, okay, and up to the umbilicus the trunk has delivered. Now what we have to do, in some cases what can happen, due to the extended legs, just imagine extended legs means the legs are extended, it is not flexed, extended, okay. The extended legs are delivered by abduction at knees. You can see here, see, this is, you see this cursor, okay, here the legs are extended, the one leg, just see this leg is extended. So by this position we will not able to deliver the legs. So what we have to do, you can see here what we are doing, we are doing the abduction at knees. We will just touch this region and we will, so what happens, due to that while we apply slight pressure, what happens, this will get flexed, okay. This here we will just, the extended legs are delivered by abduction at knees. So what we have to do, like this you can see, it was extended, we have touched this here, so now this has flexed. Understood? Now, umbilical cord is pulled down and mobilized to one side to minimize the compression. You know, the up to the umbilicus, the trunk has been delivered. So now, in order to avoid the cord has should not pull down. So for that, what you have to do, we have the umbilical cord, we have to move aside. एक साइड पे रखना पड़ेगा, umbilical cord को एक साइड पे ऐसा रखना है. So once again I will repeat, जब तक buttocks and legs डिलीवरी नहीं होता है तब तक नो टच टेक्निक हमें अप्लाई करना पड़ेगा. एंड नो टच टेक्निक, नो टच पॉलिसी बोलते हैं उसको. तो बटक्स एंड लेग्स आ गया, उसके बाद तुरंत क्या हो जाता है, ट्रंक अपने आप अप टू अम्बिलिकस अपने आप आ जाएगा, ओके. बट इन केस कि अगर ट्रंक अम्बिलिकस तक आ गया लेकिन लेग्स नहीं आया, मतलब लेग्स क्या है, एक्सटेंडेड है, ऐसा पैर को ऐसे उठा, बेबी ने ऐसे उठा के रखा है, बेबी नहीं फ्लेक्स्ड में नहीं, एक्सटेंशन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू vaginally we have to insert our fingers, हमें बेबी के लेग्स के एक्सटेंडेड लेग्स के नीज तक जाना पड़ेगा. उधर थोड़ा सा एक प्रेशर देंगे तो क्या होगा, फ्लेक्शन हो जाएगा, द नीज विल फ्लेक्स, ओके. एंड अम्बिलिकल, इसके वजह से अम्बिलिकल कोड फुल फुल मतलब उस पर प्रेशर आ सकता है. इसके लिए हमें क्या करना है, हमें थोड़ा उसको प्रेशर, थोड़ा प्रेशर तो उसको एक साइड पे करना पड़ेगा, ओके, अम्बिलिकल कोड को, सो एज टू इसका प्रेशर को ये करने का, ओके. नेक्स्ट इज, if umbilical cord, okay, if back remain posterior, rotate the trunk angle. You can see, हमने हमने पहले प्रोसीजर के पहले हमने बोला था कि द फीटल बैक एंटीरियर में होना चाहिए, लेकिन इधर यू कैन सी इट इज नॉट एंटीरियर. सो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बैक, अगर पोस्टीरियर में है बेबी का बैक तो हमें ट्रंक को रोटेट करना पड़ेगा, आगे लाने के लिए ऐसा रोटेट करना पड़ेगा, ओके. The baby is wrapped in sterile towel to prevent slipping when held. Okay, so baby को हमें sterile towel में wrap करना पड़ेगा. The baby is wrapped sterile towel to prevent slipping when held and to facilitate manipulation. तो हमने ये legs को flex करवा दिया, okay. Now तो उधर तक आ गया, तो immediately what we have to do, एक we have to wrap the baby by sterile towel so that जब हम बेबी को ऐसा मूव करते और आगे का प्रोसीजर करने के टाइम में स्लिप होना नहीं चाहिए. सो टू अवॉइड दैट वी हैव टू wrap the baby in sterile towel, okay. Next is the delivery of arms. So here what we are supposed to do, so you know the buttocks has delivered, leg has delivered, now the shoulder has to be delivered, okay. The assistant apply pressure on the fundus to prevent extension of arms. तो हमें फंडल, एक दूसरे जो असिस्टेंट है, शी हैज टू अप्लाई प्रेशर ओवर द फंडल रीजन जस्ट बिकॉज द एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स को अवॉइड करने के लिए, ओके. हमें देखना पड़ेगा हाउ द आर्म इज पोजिशन, फर्स्ट वी हैव टू कंफर्म इट कैन बी फ्लेक्स्ड और इट कैन बी एक्सटेंडेड, हम बोल नहीं सकते. सो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि बेबी ने हाथ कैसे रखा है, लेग आ गया, बटक्स आ गया, ट्रंक आ गया, अभी हमें आर्म का डिलीवरी करवाना है. तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि आर्म कैसा है, वेदर इट एक्सटेंडेड और फ्लेक्स्ड. अगर फ्लेक्स्ड है कैसे पता करेंगे, तो वर्टिब्रल कॉलम जो स्कैपुला है, स्कैपुला और वर्टिब्रल कॉलम पैरेलल रहेगा, ओके. अगर एक्सटेंडेड है तो स्कैपुला का विंगिंग होगा, ऐसे हमें पता चलेगा कि
फ्लेक्स्ड है कि एक्सटेंडेड है. फ्लेक्स्ड है तो वो बिगिनिंग ऑफ स्कैपुला होगा, लेकिन अगर एक्सटेंडेड है तो ये वर्टिब्रल बॉर्डर, स्कैपुला एंड द वर्टिब्रल कॉलम विल बी parallel. Okay. Now, the arm is delivered when one axilla is visible by hooking down elbow with the finger. तो हमें क्या करना है, हमें आर्म्स का डिलीवरी करवाना. तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पिक्चर में देख लीजिए. इसमें क्या है, हमने हाथ को ऐसे, हाथ को क्या किया है, इस डिलीवर्ड व्हेन वन. कब हम करेंगे, जब हमें एक एक्सिला दिखेगा तब तब तक नहीं करेंगे. अगर एक्सिला दिख रहा है तो उधर हमें आगे जाना है, और एल्बो एल्बो पे पकड़ करना है, जैसे हम हुक डालते हैं वैसा हमारे फिंगर से हुक करना है और नीचे की ओर खींचना पड़ेगा. So the arm is delivered when one axilla is visible by hooking down elbow with the finger. Okay, उसको ऐसा नीचे की ओर खींचना पड़ेगा. Baby should be held by feet over the sterile towel during delivery of the arm. जब हम बेबी का हाथ को डिलीवर करवा रहे हैं तब द बेबी को हमें बेबी को फीट से ऐसा ऊपर की ओर पकड़ना पड़ेगा. ओके, बेबी शुड बी हेल्ड बाय फीट ओवर द स्टेराइल टवल ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ. अंडरस्टूड. सो हमें जब एक एक्सिला दिखेगा तो उधर की ओर हमें हाथ डालना है, एल्बो के तरफ से डाउन करने का, और वी कैन डिलीवर द आर्म. डिलीवरी ऑफ द हेड. In delivery of the head, the time gap between the delivery of umbilicus and mouth is 5 to 10 minutes. So buttocks and leg has delivered, trunk has delivered, even the arms are delivered. Head has to be delivered. तो अम्बिलिकस के डिलीवरी के बाद हेड के माउथ के डिलीवरी तक 5 to 10 मिनट्स का गैप रहता है. सो देर आर डिफरेंट मेथड्स. दैट इज फर्स्ट मेथड, डिलीवरी हेड का डिलीवरी करवाने के लिए 3 मेथड है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. First one is Burns Marshall method, another one is forceps delivery, and another one is modified Mauritius Smelly weight technique. Burns Marshall method, forceps delivery, and modified Mauritius Smelly weight technique. Understood? Burns Marshall method, forceps delivery, modified Mauritius Smelly weight technique. We just by heart these terms. These 3 methods are for the delivery of the head. हेड का डिलीवर ब्रीच प्रेजेंटेशन में, ब्रीच के डिलीवरी में हेड को डिलीवर करने के लिए 3 तरीका यूज कर सकते हैं. बर्न्स मार्शल मेथड, या फॉर्सेस मेथड, या मॉडिफाइड मॉरिशस मेथड. ओके, now first one is Burns Marshall method. So in this Burns Marshall method, now we just see here how the baby legs are here, buttocks are here, trunk are here, even the arms are delivered. Okay. Now what we have to deliver the head. So baby is allowed to hang by its weight. हमें पकड़ना है, मतलब ऐसे खुद बेबी हैंग कर रहा है, खुद अपने वेट पे हैंग कर रहा है. असिस्टेंट का क्या काम है, असिस्टेंट डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड सुप्रा प्यूबिक प्रेशर. तो असिस्टेंट क्या करेगा, सुप्रा प्यूबिक रीजन इधर प्रेशर देगा. विच कौन सा प्रेशर, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड प्रेशर. तो क्या होगा, हेड फ्लेक्स होगा. ओके, दो ही हेड ऐसा मोड़ेगा. ओके, तो असिस्टेंट क्या करना चाहिए, असिस्टेंट हैज टू अप्लाई डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड सुप्राप्यूबिक प्रेशर so as to perform the head flexion. So now the right hand, अभी जो प्रोसीजर कर रहे हैं उनका राइट हैंड क्या करना है, grasp angles with the finger in between when nape of the neck is visible under the pubic arch. तो असिस्टेंट ने सुप्राप्यूबिक प्रेशर दिया, हेड फ्लेक्स हुआ, तब नेप ऑफ द नेक ऐसा दिखाई देगा इधर. तब ये प्रोसीजर करने वाले को क्या करना है, 3 फिंगर्स से होल्ड करना है बेबी के एंकल को. सो हमने ऐसा, यू कैन सी हियर हाउ दे आर होल्डिंग इट. ओके, ऐसा पकड़ना है बेबी के नेक. पैर को, ट्रंक इज स्वंग अपवर्ड फॉरवर्ड टिल माउथ इज क्लियर्ड ऑफ द वल्वा. तो क्या करना है, सो बेबी के वेट पे उसको ऐसा हैंग कर रहा था, बट व्हाट वी हैव टू वी डिड, हमने फीट को होल्ड किया. होल्ड करके हम क्या कर रहे हैं, उसको हमें swung upward, ऊपर के ओर हम उसको उठा रहे हैं. You can see in the see picture this. We are elevating the baby trunk को हम elevate swung upward, forward
till the mouth is cleared of the vulva, माउथ का डिलीवरी होने तक हमें क्या करना है, ऐसा करना। नाउ फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिप्रेस द ट्रंक टू डिलीवर द रेस्ट ऑफ द, हमें फिर अभी ट्रंक को डिप्रेस करना पड़ेगा सो एज टू डिलीवर द रेस्ट ऑफ द हेड। ड्यूरिंग दिस टाइम जो दूसरा जो हाथ है लेफ्ट हैंड वो पेरिनियम को गार्ड करने के लिए। अंडरस्टूड? सो दैट इज द प्रोसीजर फॉर द बर्न्स मार्शल मेथड। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इन बर्न्स मार्शल मेथड, ये हेड का डिलीवरी के लिए है बर्न्स मार्शल मेथड। So what we will do in the Burns Marshall method, the baby will be allowed to hang by its weight only, उसके weight पे ही वो ऐसा hang करेगा। असिस्टेंट क्या करेगा, असिस्टेंट का काम है वो सुप्राप्यूबिक प्रेशर देगा इन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब प्रेशर देके बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड वे पे प्रेशर, सुप्राप्यूबिक प्रेशर देके। एंड जो प्रोसीजर कर रहे हैं राइट हैंड, उसको राइट हैंड को राइट हैंड से फिंगर से एंकल को पकड़ना है, और ये कब करना है, जब नेक ऑफ द नेक विजिबल होगा तब। ओके ना, तो हमने ऊपर के और बेड्राउंड को स्वंग किया, देन फॉरवर्ड जब तक माउथ को क्लियर नहीं किया तब तक, देन फिर हम डिप्रेस करेंगे, डिप्रेस द ट्रंक to deliver the rest of the head. And meanwhile वो time पे the left hand should be should guide the parent. Okay, so that is that we are supposed to do the in bond smasher method. So when the अगर जब हमने सो इधर ट्रंक ऐसा हमने ऊपर किया तब हमें क्या करना पड़ेगा, वाजिनल जो भी सेक्रेशन है उसको सब हमें म्यूकोसकर से क्लियर करना पड़ेगा। फिर हमें द ट्रंक इज रिप्रेस टू डिलीवर द रेस्ट ऑफ द हेड। अंडरस्टूड? तो जब हम सुप्राप्यूबिक प्रेशर देंगे, ओके, एंड जब ये प्यूबिक आर्च में जब हमें इधर जब हमें नेक ऑफ द नेक दिखेगा तब हमें क्या करना है, ऐसा फीट को होल्ड करना है और अपवर्ड ट्रैक्शन देना। ओके, so that is, and meanwhile we have to hold the, we have to guard the perineum. Understood? That is Burns Marshall method. Once again I will repeat, Burns Marshall method किसके लिए है, assisted breech delivery में हेड का डिलीवरी के लिए है Burns Marshall method। ओके, उसमें पहला बेबी को हम ऐसे अलाउ करेंगे, वो अपने आप खुद अपने वेट पे हैंग कर रहा है, एंड एक असिस्टेंट रहेगा, वो असिस्टेंट को क्या करना है, उसको सुप्राक्यूबिक प्रेशर देना है ताकि हेड फ्लेक्स हो जाए। फ्लेक्स होने के लिए डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई करेंगे। एंड जो परफॉर्म करने वाले प्रोसीजर उनके जब नेक ऑफ द नेक, नेक ऑफ द नेक जब ऐसा प्यूबिक आर्क में दिखेगा तब उनको ऐसा फीट को होल्ड करना है, फीट को होल्ड करके ट्रंक को क्या करेंगे, ऊपर के और अपवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगे। ओके, with the finger, the steady traction and steady traction देंगे and is swung in upward and forward direction. Okay, now meanwhile जो left hand है it will be guarding the perineum. Okay, now तो तब तक बेबी का माउथ डिलीवर होगा, तो जब immediately after that using the mucus sucker we are supposed to clear the airway of the baby. Okay, that is about it. And then depress, after depressing the trunk the rest of the head will be delivered. That is Bond's Marshall method. Understood? Now next the forceps delivery. So in case for the delivery of the head, what we can do, we can apply forceps. So here also the baby is allowed to hang by its weight, then assistant को suprapubic pressure देना है, the raises the legs of the child when occiput is against pubic symphysis। अगर जब occiput pubic symphysis के उधर आ जाएगा, हमें एक असिस्टेंट क्या करेगा, बेबी के लेग को रेस करेगा, एंड देन एक डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेप्स डालते हैं, टिपर फोर्स और पिनाड फोर्सेप्स बोलते हैं, वो दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ द हेड। सो हेड इज डिलीवर स्लोली, स्लोली हेड को डिलीवर करते हैं, लेस to reduce the compression or decompression, मतलब slowly it has to be done, head is delivered slowly। okay, so जब भी ऑक्सीपुट, जब भी सिम्फाइसिस प्यूबिस के बैक के अगेंस्ट आ जाएगा, हमें क्या करना है, दूसरे जो असिस्टेंट है वो बेबी के लेग को रेस करेंगे ताकि जगह मिलेगा ब्लेड्स को अंदर डालने का, इंट्रोड्यूस करने का। ओके, और टू मच ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्रंक, अगर ज़्यादा हमने एलिवेट कर लिया तो एक्सटेंशन ऑफ हेड हो जाएगा, इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो फोर्सेप्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, पेपर फोर्सेप्स यूज करते हैं, एंड अदरवाइज इट इवन इट इज नोन एज
pinard forceps. Okay, pipper forceps we are introducing. The head should be delivered slowly over 1 minute. 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेके धीरे धीरे से हेड को डिलीवर करना है, ताकि कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो अगर कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन हुआ तो इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, slowly the delivery of the head has to be performed using the forceps. Okay, and which type of forceps? Pipper forceps. Here also we need an assistant who has to provide the suprapubic pressure and also to raise the leg of the child when occiput has reached the under the symphysis pubis. Okay, so that is forceps delivery. Now next is modified Mauritius Melly weight technique. Okay, हमने बोला 3 मेथड है हेड का डिलीवरी करने का, बॉन्स मार्शल मेथड, देन फोर्सेस डिलीवरी, नेक्स्ट थर्ड वन इज द मॉडिफाइड Mauritius Melly weight technique. Okay, now here you have to, दो चीज हमें याद रखना है, malar flexion and shoulder traction. This two term you should study, malar flexion and shoulder traction. Okay, you should remember this during modified Mauritius Melly weight technique. Okay, ये नाम इनको ये नाम ये प्रोसीजर को क्यों दिया है, क्योंकि ये तीन ग्रेट ऑब्स्टेट्रिशियंस ने ये टेक्निक को पहले टाइम इंट्रोड्यूस किया था, तो इसके लिए ये नाम दिया है। तीन जन थे, मॉरिशियस, मिली, वेट, तीन ग्रेट ऑब्स्टेट्रिशियंस, दे फर्स्ट टाइम दे परफॉर्म्ड इट, सो इट इज नोन एज मॉरिशियस मिली वेट टेक्निक। ओके, हियर द बेबी को कैसे पोजीशन देना है, तो हमने फोर्सेप्स में बेबी अपने आप हैंग कर रहा है, इवन बॉन्स मार्शल मेथड में अपने आप अपने वेट में है। हियर द बेबी इज प्लेस्ड ऑन सुपिनेटेड लेफ्ट हैंड विद लिम्स हैंग। यू कैन सी हियर, देखो जो परफॉर्म कर रहे हैं उनका हाथ के ऊपर बेबी लाई कर रहा है। ओके, द बेबी इज प्लेस्ड ऑन सुपिनेटेड लेफ्ट हैंड विद लिम्स हैंग। यू कैन सी द limbs hanging. Now, the assistant, what is her role? She has to give the suprapubic pressure. Okay. Now, the left hand, ये एक हैंड के ऊपर बेबी को हैंग किया है, लिम्स दोनों साइड में हैंग कर रहा है। लेफ्ट हैंड के मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर आर प्लेस्ड ऑन दी malar bones to maintain the head flexion. तो जो लेफ्ट हैंड है, यू कैन सी ये जो लेफ्ट हैंड है, ओके, उसके मिडिल, यू कैन सी हियर मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर, ये दो हैंड को हमने बोला मैलार फ्लेक्शन, ये याद रखना। तो ये जो दो फिंगर है, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, वो कहाँ पे रखा है, मैलार बोन्स में रखा है। एंड ऐसे क्यों रख रहे हैं, हेड फ्लेक्शन मेंटेन करने के लिए। ओके, सो दैट इज लेफ्ट हैंड का काम। नाउ राइट हैंड, जो दूसरा जो हाथ है, वो क्या करेंगे, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, वो दोनों फिंगर रिंग एंड लिटिल फिंगर राइट शोल्डर के उधर रखेंगे। ओके, एंड यू जस्ट इमेजिन कैसे रखेंगे। ओके, रिंग फिंगर and little finger, these two fingers are kept on the right shoulder. Okay, and index finger कहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट शोल्डर में रखेंगे। दैट इज नॉट विजुअलाइज्ड हियर, वहाँ पे नहीं दिखेगा। मिडिल फिंगर कहाँ रखेंगे, सब ऑक्सीपिटल रीजन। अंडरस्टूड। लेफ्ट हैंड के ऊपर बेबी इज लाइक, बेबी इज केप्ट लाइक दिस प्लेस्ड। ओके, एंड लिम्स हैंग कर रहा है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी लेफ्ट हैंड का इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, ये दो फिंगर्स मैलार बोन्स में ऐसा पोजीशन किया है फ्लेक्शन को मेंटेन करने के लिए। ना दूसरा जो हाथ है, राइट हैंड के रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, ये दोनों फिंगर को राइट शोल्डर में रखा है। इंडेक्स फिंगर ऑपोजिट साइड में लेफ्ट शोल्डर पर रखा है। ओके, एंड मिडिल फिंगर सब ऑक्सीपिटल रीजन में रखा है। ओके, यू कैन सी हियर द मिडिल फिंगर इज प्लेस्ड ऑक्सीपिटल, सब ऑक्सीपिटल रीजन में रखा है, ये दो फिंगर लेफ्ट शोल्डर। ओके, राइट शोल्डर। नाउ अभी now what we are supposed to do, we have to give downward backward traction is given till nape of neck is visible. जब तक nape of the neck visible नहीं होता है तब तक डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैक्शन, नीचे के ओर एंड पीछे की ओर डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैक्शन देना है। ओके, तो तब nape of the neck will be delivered, विजिबल हो जाएगा। देन उसके बाद अपवर्ड एंड फॉरवर्ड ट्रैक्शन करना है
in order to release the face and bro. Okay, nape of the neck delivered होने के लिए डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैक्शन देना पड़ेगा, whereas फेस एंड ब्रो का डिलीवरी के लिए अपवर्ड एंड फॉरवर्ड ट्रैक्शन देना पड़ेगा. ओके, एंड असिस्टेंट इधर सुप्राप्यूबिक प्रेशर दे रहे हैं. ओके, depress to release the occiput and vertex. Okay. So that is about the modified Mauritius Millie weight technique. So you have to, तो malar flexion हो गया, understand हुआ कि नहीं. malar flexion में हमने क्या किया है, इंडेक्स राइट हैंड के सॉरी लेफ्ट हैंड के मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर को हमने malar बोन्स के ऊपर रखा है, एंड तो वो फ्लेक्शन मेंटेन करने के लिए. और शोल्डर ट्रैक्शन के लिए राइट हैंड हमने ऊपर रखा है बेबी के ऊपर, ऐसा एक राइट शोल्डर में लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर सब ऑक्सीपिटल रीजन में, एंड दूसरा जो इंडेक्स फिंगर है वो लेफ्ट शोल्डर, ऐसा रख के हमने डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैक्शन देंगे तो नेप ऑफ द नेक विजिबल हो जाएगा. एंड देन अपवर्ड एंड फॉरवर्ड ट्रैक्शन देंगे तो ब्रो एंड फेस का डिलीवरी हो जाएगा. ओके, सो ये दोनों शोल्डर ट्रैक्शन भी हो गया, मैलर फ्लेक्शन भी हो गया. सो दैट इज मॉडिफाइड Mauritius Nelly weight technique. Understood? So that is about, these are the three methods in order to deliver the fetal head in the breech delivery. Okay. So इसके बाद तो दोनों डिलीवर्ड हो गया है, तो thereafter the fetus is carried in upward and forward direction towards the mother's abdomen, releasing the face, bro, and lastly the trunk will be depressed to release the occiput and vertex. तो इधर हम नेप ऑफ द नेक डिलीवर्ड हो गया है, फिक्स एंड प्रो डिलीवर हो गया, देन हम ट्रंक को थोड़ा सा डिप्रेस करेंगे तो ऑक्सीपिट एंड वर्टेक्स दोनों का डिलीवरी भी हो जाएगा. Okay, that is modified Mauritius Millie weight technique. In this procedure, we have to remember these two terms: malar flexion and shoulder traction. Okay. Here also assistant is needed. ये तीनों प्रोसीजर में असिस्टेंट की जरूरत है. फर्स्ट में असिस्टेंट ने क्या किया, सुप्राप्यूबिक प्रेशर दे रहे, फॉर्सिस डिलीवरी में भी सुप्राप्यूबिक प्रेशर है, और भी बेबी का फीट को ऐसा होल्ड भी करना है ऊपर की ओर, एंड हियर असिस्टेंट सुप्राप्यूबिक प्रेशर देगा. ओके, इफ बेबी इज एस्फिक्सिया है, बेबी को तो रेसिस्टेशन करना पड़ेगा. थर्ड स्टेज में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जैसे नॉर्मली हम करते दैट. देन अगर प्री टर्म ब्रीच है तो ईसीवी नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा. एंड फीटल वेट लेस देन 1.5 ग्राम है तो सिजेरियन सेक्शन इज प्रेफरेबल. ओके, so that is delivery of that. Now next is complicated breech delivery. Okay, complicated breech delivery in case if buttocks का ही डिलीवरी अरेस्टेड है, नहीं हो रहा है. ओके, बटेक्स का ही डिलीवरी हमने बोला, एक्चुअली बटेक्स एंड ट्रंक तो बोथ कंप्रेसिबल है, बटेक्स, so it is easy to come, but in case if buttocks is arrested, the delivery of buttocks is arrested, and if अगर आउटलेट में, हमें पता है पेल्विस में तीन है, पेल्विक ब्रिम कैविटी एंड आउटलेट, अगर आउटलेट में तक आया एंड उधर से बाहर नहीं आ रहा है, तो कोसेस क्या क्या हो सकता है. आउटलेट में कंट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस आउटलेट में हो रहा है, बेबी बिग है एंड एक्सटेंडेड लेग्स है. यू आर सी दिस इज एक्सटेंडेड लेग्स. ओके, हेड लेग्स, सॉरी एक्सटेंडेड लेग्स, सो लेग्स फ्लेक्स नहीं, एक्सटेंडेड है. देन वीक यूट्राइन कंट्रैक्शन इज नॉट इनफ एंड पेरिनियम रिजिड, ये सब केसेस की वजह से बटेक्स का अरेस्ट हो सकता है. एंड अगर कंट्रैक्टेड, ये कोसेस में अगर कंट्रैक्टेड पेल्विस एक कोस था या बिग बेबी है, ये दो केसेस में हमें सिजेरियन करना ही पड़ेगा. हमें पहले कोर्स को पता करना पड़ेगा. We have to find out the courses. So these four are the main courses for that, and then we have to exclude जो नहीं है उसको exclude करना पड़ेगा. If it is contracted and big baby, cesarean section ही करेंगे, we will not proceed for the vaginal delivery. If contracted pelvis or big baby नहीं है, episiotomy can be given, fundal pressure with groin traction. What is groin traction? You can see how we are holding index finger, हमारे हाथ का index finger groin में रखा है. Okay, placed in groin fold and traction is given towards trunk till the delivery of the knee. तो क्या करेंगे, index finger को groin
ग्रोइन मतलब इंडेक्स फिंगर को ग्रोइन में लेके रखेंगे एंड देन ट्रैक्शन देंगे ट्रंक के ओर. ओके, ट्रैक्शन इज गिवन टुवर्ड्स द ट्रंक. जब तक डिलीवरी ऑफ द नी नहीं होता है तब तक करेंगे, फिर उसके बाद लेग्स का डिलीवरी हो जाएगा. अंडरस्टूड. तो बटेक्स का डिलीवरी हो गया है, देन डिलीवरी ऑफ द नी भी हो जाएगा. अंडरस्टूड. दैट इज अ बटेक्स. अगर बटेक्स का अरेस्ट है तो क्या करना पड़ेगा, ग्रोइन ट्रैक्शन होने देना पड़ेगा ना. अगर कैविटी में है, हमने बोला था आउटलेट तक आ गया, आउटलेट में कंट्रैक्टेड, आउटलेट में डायमीटर्स कंट्रैक्टेड है इसलिए नहीं आ रहा है, तो ग्रोइन ट्रैक्शन. नेक्स्ट इज अगर कैविटी में at or above the level of ischial spine पे अटका हुआ है. इफ इट इज लाइक दैट, इफ दैट्स द सिचुएशन, फोर्सेस एक तो कंट्रैक्टेड पेल्विस होता है, बेबी वीक है, सॉरी बिग बेबी है, या यूट्राइन कंट्रैक्शन वीक है, तो ये रीजन है. ओके. तो ब्रीच के ट्रायल ऑफ ब्रीच का, व्हेन सर्विक्स फुली डायलेटेड ब्रीच शुड डिसेंड डाउन टू द पेरिनियम. ओके, ट्रायल ब्रीच का हम ट्रायल कर रहे हैं कि हाँ हो जाएगा करके, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं. अगर वो फेल हो रहा है तो सीएस का सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो एक मैन्यूअर इज देयर, दैट इज पिनाट्स मैन्यूअर. And mainly it is done in frank breech. You can see the extended legs. frank breech में legs extended रहता है. अगर ये केस में हम क्या कर सकते हैं, पिनाट्स मैनुअर यूज करते हैं. क्या करना है हमें, पिक्चर में आप देखो, मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर आर कैरिड अप टू द पोप्लिटेल फोसा. ये जो पोप्लिटेल फोसा है उधर तक वजेनली हाथ डाल के लेग्स के नी जॉइंट, नी पीछे पोप्लिटियल फोसा तक लेके जाना है मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर को. फिर हमें पोप्लिटियल फोसा में थोड़ा सा प्रेशर देना, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऐसे फोल्ड हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा पैर. ओके, देन लेग लेग अबडक्शन हो जाएगा, फीटल फुट, पैर को ऐसे पकड़ ले, फुट को पकड़ लेने का एंड नीचे की ओर पुल डाउन करने का. दैट इज fetal foot is grasped at the ankle and pulled down. So that is Pinard's maneuver. ये कब करते हैं, अगर buttocks का delivery is not happening, arrest of the fetal buttocks. हमने 3 प्रोसीजर पढ़ा था, वो हेड के डिलीवरी के लिए है, ये ग्रोइन ट्रैक्शन बटेक्स का डिलीवरी के लिए है, ये पिनाट्स मैनुअर भी बटेक्स के डिलीवरी के लिए. ओके, सो पिनाट्स मैनुअर में हम क्या करते हैं, इंडेक्स फ्लेक्शन एंड अबडक्शन करेंगे, फ्लेक्शन करेंगे पोप्लिटियल फोसा में, फ्लेक्शन एंड अबडक्शन करेंगे, फिर एंगल को पकड़ेंगे और नीचे के और खींच लेंगे. दैट इज वी आर डूइंग इन पिनाट्स मैनुअर. ओके, एंड इट इज यूजुअली इट इज डन इन फ्रैंक ब्रीच. Okay. Next is arrest of the shoulder. शोल्डर अरेस्टेड है, शोल्डर इज नॉट एबल टू कम. ये कब होता है, जब एक्सटेंडेड आर्म्स है तब होता है. So course is extended arm with lateral or dorsal displacement due to faulty technique. Then diagnosis क्या है, winging of scapula होगा. Okay. Then flex absence of flex limb in front of the chest. अगर flexion maintain कर रहा है, attitude flexion है तो limbs will be at over the chest, है ना. तो लेकिन वो नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि एक्सटेंडेड आर्म है. तो मैनेजमेंट, अनदर वन इम्पॉर्टेंट टर्म इज द मैनेजमेंट लो सेट मैनुअर. What it is, low sets maneuver. Here what we are doing, um, actually low set maneuver. Okay, the advantage of low set maneuver is it is very applicable. इंट्रा यूट्राइन कुछ मैनिपुलेशन हम इधर नहीं कर रहे, जो भी कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा यूट्राइन कर रहे हैं, अंदर कुछ भी नहीं कर रहे हैं. एंड ये कोई भी आर्म डिस्प्लेसमेंट केसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है. लो सेट मैनुअर का बात बोल रहे हैं वो आर्म के डिलीवरी के लिए. अंडरस्टूड. तो बर्न्स मार्शल हुआ, फोर्सेप्स हुआ, देन एक और है मॉरिशियस मिली वेट. ये तीनों चीज हेड का डिलीवरी के लिए है, ग्रोइन ट्रैक्शन एंड पिनाट्स मैनुअर बटेक्स के डिलीवरी के लिए है ना. अगर आर्म्स नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, लो सेट मैनुअर. ओके, तो इसमें क्या एडवांटेज है, इट इज वेरी वाइडली एप्लीकेबल, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है. जो भी हम कर रहे, वॉट एवर वी आर परफॉर्मिंग हियर, इट इज आउटसाइड नॉट इनसाइड द यूट्रस. Intrauterine कोई भी manipulation नहीं, no any manipulation we are, no we are not doing in intrauterine. And any type of arm displacement this maneuver can be done. Okay, now the principle, the first one is when the anterior shoulder is above the symphysis pubis, posterior shoulder is below the sacropromontory, and posterior shoulder is rotated forward.
डाउनवर्ड, इट विल अपीयर बिलो द pubic symphysis। ये तो नॉर्मली ऐसा ही होता है। अगर जब भी एंटीरियर शोल्डर सिम्फाइसिस पुबिक्स के अबव होता है तो पोस्टीरियर शोल्डर कहाँ रहेगा, सेकल प्रोमेंट्री में रहता है। एंड व्हेन सेकल प्रोमेंट्री को जब हम फॉरवर्ड की ओर रोटेट करते हैं तब वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे आ जाएगा, फिर बिलो द सिम्फाइसिस ना। अभी हमें क्या करना है, बेबी को होल्ड करना है। कैसे होल्ड करेंगे, उसको एक ग्रिप का नाम बोलते हैं, दैट इज फेमोरो पेल्विक ग्रिप। फेमोरो, फेमोरो हमें पता है, फेमोरल बोन, देन पेल्विस, दिस टू वी नो। ओके, याद रखना बेबी को हमें कैसे होल्ड करना है, फेमोरो पेल्विक ग्रिप। Baby grasps using both hands by femoral. Here we are using both our hands. Okay, now start only when inferior angle of anterior scapula is visible under pubic arch. When we will start, हमने होल्ड कर लिया फेमोरा पेल्विक ग्रिप में, हमने होल्ड किया बेबी को। जस्ट रिमेंबर बेबी का बटेक्स का डिलीवरी हो गया है, इवन ट्रंक का डिलीवरी हो गया, सिर्फ आर्म्स डिलीवर करना है। ओके, तब मतलब जब भी स्कैपुला का इंफीरियर एंगल हमें दिखाई पड़ेगा तभी ये चीज करना है। ओके, बेबी को हमें लिफ्ट करना है, लिफ्ट मतलब उठाना है ऐसे स्लाइटली। फिर क्या करना है, रोटेट करना है 180 डिग्री, 180 डिग्री विद डाउनवर्ड ट्रैक्शन, देन हुक्ड आउट, देन ट्रंक रोटेटेड इन रिवर्स, फिर उल्टा। एंड देन जब हम इमेज देखें तब हमें पता चलेगा। Now here you can see what we have done. This is femoropelvic grip. See, femoro, both दोनों हाथ से दोनों femoropelvic grip को होल्ड किया है। अंडरस्टूड? तो वो हम ऐसा हमने होल्ड किया है बेबी ना। उसके देन कब हमें स्टार्ट करना है, जब when we are able to see the inferior angle of the scapula, then only we have to start. Okay, now what we are supposed to do, the baby is lifted slightly to post lateral flexion। lateral flexion होने के लिए हम बेबी कैसे होल्ड, कैसे थोड़ा सा उठाएंगे बेबी, लिफ्टेड slightly we are lifting the baby, and then trunk को 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। सी 180 डिग्री we are rotating the baby, okay, and maintaining a downward traction, okay। And because of this what will happen, the posterior arm, you can see here 180 डिग्री, ये एंटीरियर आर्म है, ये पोस्टीरियर आर्म। ओके, ऐसा था, हमने ऐसा होल्ड किया एंड वी आर गोइंग टू रोटेट द बेबी 180 डिग्री। जब रोटेट होने से, याद रखना पूरा 180 डिग्री हम रोटेट करते हैं। ऐसा रोटेट करने से क्या होगा, इस पोस्टीरियर आर्म, वेयर एंटीरियर आर्म जहाँ पे था वहाँ पे क्या आएगा, पोस्टीरियर आर्म आ जाएगा। ओके, the trunk is rotated through 180 degree, keeping the back anterior and maintaining a downward traction. This will bring the posterior arm to emerge under the pubic arch, which is then hooked out. फिर हम इसको क्या करेंगे, hook down, नीचे की ओर hook down करेंगे। Now, next अभी क्या करना है, तो इधर posterior arm का डिलीवरी हो गया। Okay? Now next क्या करेंगे, again रिवर्स, उल्टे डायरेक्शन में। ओके, बेबी को ऐसा रोटेट करके हम पोस्टर आर्म का डिलीवरी उल्टा रोटेट करेंगे 180 डिग्री। द ट्रंक इज देन रोटेटेड इन द रिवर्स डायरेक्शन, कीपिंग द बैक एंटीरियर टू डिलीवरी द एंटीरियर शोल्डर अंडर दिस। नाउ अभी क्या है, एंटीरियर शोल्डर कहाँ आ गया, सिम्बाइस पुबिस के अंदर आ गया। एंड देन व्हाट विल हैपन, द डिलीवरी ऑफ द हम्स गॉट डिलीवर्ड। अंडरस्टूड? तो क्या है, द बेबी विल बी लाइंग लाइक दिस, femoropelvic grip हमें देना है using the both hands। okay, now what we have to do, 180 degree rotate करना है बेबी को। याद रखना the back should be anterior। okay, keeping that on mind, we will just lift the, पहले lift किया बेबी को, then we are rotating the baby 180 degree। okay, तब क्या हुआ, posterior shoulder under the pubic arch आ गया। now hook down करेंगे तो posterior shoulder का डिलीवरी हो जाएगा। Now for the delivery of the anterior shoulder, what we will do, we will reverse, हम फिर से 180 डिग्री रोटेट करेंगे। याद रखना anterior, the baby का back anteriorly रहना चाहिए। okay, so the post now anterior shoulder pipi car के नीचे आएगा, then hook down करेंगे तो there will be delivery of the anterior shoulder। Understood? That is Lowset maneuver. Lowset maneuver is performed for the delivery of arms। okay, so that is about the different
assisted breech extraction. Okay, so we will just revise whatever we discussed today. I know it is it's slight difficult, and you should remember you are supposed to while during examination you are supposed to demonstrate this during examination, the breech extraction. Okay, so okay, now we will see here from here assisted breech delivery. Okay, so for the assisted breech delivery, in 10 percentage of cases there is no need of assistance, the delivery will happen. Okay, but in some cases there some assistance will be needed. Okay, so for that anesthetist should be present, assistant should be present, एपिsiotomy करने के लिए इंस्ट्रूमेंट और सूचर मटेरियल सब चाहिए, नियोनेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑब्स्टेट्रिशियन होना चाहिए, ऑब्स्टेटिक फोर्सेप्स रखना चाहिए. Okay, स्टेप में हमें हम नाउ वी आर सेइंग अबाउट द असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी. तो लिथोटमी पोजीशन, लेकिन थोड़ा लैटरली थोड़ा टिल्ट करना है प्रेशर को कम करने के, ऑटोकावल प्रेशर, आयाटोकावल. ब्लैडर को एम्प्टी करना है, सेप्टिक टेक्निक है. एपिसियोटमी देने के लिए इन्फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, एपिसियोटमी देना पड़ेगा. मदर को एनकरेज करना बियर डाउन करने के लिए. हमें टू अम्बिलिकस तक डिलीवरी करने के लिए नॉट टच टेक्निक है. ओके, उतना तक डिलीवरी हो गया, फिर हमें देखना है कि ओके वो उतना तक डिलीवरी हो गया है, फिर हम उतना पार्ट को हम रैप करेंगे, स्टेराइल टवल से रैप करेंगे. ओके, देन आर्म्स का डिलीवरी के लिए हमें क्या करना है, असिस्टेंट प्रेशर देंगे फंडस में. ओके, एंड हमें देखना है कि कैसा है बेबी का आर्म, एक्सटेंडेड है कि फ्लेक्स्ड है. वो कैसे पता चलेगा? अगर फ्लेक्स्ड है तो ये जो स्कैपुला है, स्कैपुला का वर्टिब्रल बॉर्डर एंड वर्टिब्रल कॉलम दोनों पैरेलल रहेगा अगर फ्लेक्स्ड है तो. ओके, हम खुद अपना हाथ को फ्लेक्स करके देखेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम एंड स्कैपुला पैरेलल रहता है, लेकिन अगर एक्सटेंड कर रहे ऊपर उठा रहे तो हमें दिखेगा विंग को स्कैपुला दिखता है. ओके, तो ऐसे पता चल जाएगा कि आर्म फ्लेक्स्ड है कि एक्सटेंडेड है. ओके, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंट्रोड्यूस हमारे हाथ को इंट्रोड्यूस करके एल्बो, जब एक्सला दिखेगा तब हमें इंट्रोड्यूस करना है, फिर एल्बो में ऐसा पकड़ के नीचे की ओर खींचना है. दैट इज डिलीवरी ऑफ द आर्म्स. ओके, नाउ डिलीवरी ऑफ द हेड के लिए बॉन्स तीन मेथड है, बॉन्स मार्शल मेथड, फोर्सेप्स एंड मॉडिफाइड मॉरिशस मेनली वेट टेक्निक. बॉन्स मार्शल मेथड में हमें पता है बेबी विल बी हैंग ऑन इट्स ऑन वेट, बेबी को ऐसे हैंग करने देंगे. एक असिस्टेंट रहेगा जो सुप्राप्यूबिक प्रेशर देगा, एंड वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में देना है, क्योंकि वो हेड का फ्लेक्शन मेंटेन रखने के लिए. और जो कर रहे हैं प्रोसीजर, उनका राइट हैंड से उनको जब नेप ऑफ द नेक दिखाई पड़ेगा बेबी का आर्च के नीचे, तब क्या करना है, बेबी के फीट को ऐसा पकड़ना है, होल्ड करना है, देन स्विंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड टिल द माउथ दिखेगा. तो माउथ जैसे ही दिखता है हमें क्या करना है, क्लियर आउट करना है म्यूकस को, सब म्यूकस आकर यूज करके वी हैव टू क्लियर आउट द एयरवे. ओके, देन फिर तो माउथ का डिलीवरी हो गया, देन फिर हम डिप्रेस करेंगे ट्रंक को ताकि रेस्ट ऑफ द हेड डिलीवर हो जाए. वही टाइम पे लेफ्ट हैंड कहाँ पे रखेंगे, पेरिनियम में रखेंगे कि पेरिनियम को गार्ड करने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज फोर्सेप्स डिलीवरी. इसमें भी बेबी विल बी अलाउड टू हैंग इट्स ऑन इन द स्ट्रेट. एक असिस्टेंट रहेगा, वो सुप्राप्यूबिक प्रेशर देंगे. एंड और ये भी करना है कि जब हम फोर्सेप्स डालने से पहले बेबी को ऐसा होल्ड करना पड़ेगा, ऐसे पकड़ के ऊपर की ओर डालना पड़ेगा ताकि हम फोर्सेप्स अंदर डाल सकते हैं ताकि, लेकिन ज़्यादा नहीं ऊपर करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये फ्लेक्स्ड पोजीशन जो बेबी का मेंटेन हुआ है वो एक्सटेंशन हो जाएगा. अगर हो गया तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है. सो हमें याद रखने का स्लाइटली, हमें थोड़ा स्लाइटली ही लेफ्ट करना है, तो स्पेस मिल जाएगा फोर्सेप्स को डालने के लिए. तो कौन सा फोर्सेप्स यूज करेंगे, पेपर फोर्सेप्स यूज करते हैं. स्लोली डिलीवर्ड करना है, नहीं तो कंप्रेशन डिकम्प्रेशन होने की वजह से इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो जाएगा. टू अवॉइड दैट more than 1 minute लेके slightly we have to deliver the head of the baby. Okay, the next is Mauritius Millie weight technique. उसमें हमें क्या करना है, एक असिस्टेंट रहेगा, वो सुप्राप्यूबिक प्रेशर देगा. जो कर रहे हैं पर जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उनका लेफ्ट हैंड के ऊपर को बेबी का बॉडी को रखना है. लिम्स ऐसे हैंग करेगा, यू कैन सी हियर लिम्स आर हैंगिंग. एंड जो लेफ्ट हैंड है उसके
इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को ऐसे मैलार बोन के ऊपर रखना है। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि ये फ्लेक्स पोजीशन में ही रहे इसके लिए। ओके, देन जो है दूसरे जो राइट राइट हैंड है उसका रिंग एंड लिटिल फिंगर राइट राइट शोल्डर में होगा। मिडिल फिंगर सब ऑक्सीपिटल रीजन में रखेंगे एंड दूसरा जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर वो लेफ्ट शोल्डर में रहेगा। एंड उधर ऐसा पोजीशन में रखने के बाद हमें एक डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैक्शन देना है ताकि नेक ऑफ द नेक विल बी विजिबल। देन अपवर्ड एंड फॉरवर्ड ट्रैक्शन देने से द फेस एंड ब्रो विल बी विजिबल। ओके, देन हमें ट्रंक को एक बार डिप्रेस करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीपिट एंड वर्टेक्स का भी डिलीवरी हो जाए। सो हेड का डिलीवरी हो जाएगा। दैट इज मॉरिशियस मिली वेट टेक्निक। ओके, सो दिस थ्री टेक्निक इज फॉर द डिलीवरी ऑफ द fetal head in the breech presentation. Okay, सो अगर बेबी एक्सफिसिया है उनको तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड थर्ड स्टेज में नॉर्मल जैसा हम करते हैं वैसा करना। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेटेड ब्रीच डिलीवरी। इसमें अगर बटेक्स अरेस्टेड है, बटेक्स का डिलीवरी नहीं हो रहा है तो एक मेथड हमें पहले तो ये कोर्सेस है, शायद कंट्रैक्टेड पेल्विस हो सकता है, नहीं तो बिग बेबी है। ये दो केस है तो हमें सिसेरियन करना पड़ेगा। बाकी अगर यूट्राइन कंट्रैक्शंस इनफ नहीं है या रिजिड पेरिनियम है तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज दिस मेथड, ग्रोइंग ट्रैक्शन मेथड। उसमें हम क्या करना है, हमें हमारा इंडेक्स दोनों हाथ का इंडेक्स फिंगर को इंट्रोड्यूस करना है ग्रोइंग ग्रोइंग के फोल्ड में जाके ऐसा करके डाउनवर्ड ट्रैक्शन देना पड़ेगा टुवर्ड्स ट्रंक, तो नी का डिलीवरी हो जाएगा। दैट इज ग्रोइंग ट्रैक्शन। ना अगर कैविटी के उधर एट द लेवल ऑफ फिशियल स्पाइन या अबव द लेवल ऑफ फिशियल स्पाइन में अरेस्ट है, उधर तक आ गया बट फॉरवर्ड और आगे नहीं आ रहा है, इन दैट केसेस ऑल्सो कंट्रैक्टेड पेल्विस कैन बी ए कोर्स सिजरिंग करना पड़ेगा। बिग वीक कंट्रैक्शन है तो हम ट्रायल कर सकते हैं ब्रीच का। व्हेन सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड एंड ब्रीच पेरिनियम तक आ रहा है तो हम ट्रायल ऑफ ब्रीच कर सकते हैं, नहीं तो हमें सीएस करना पड़ेगा। नहीं, एक मेथड है अगर फ्रैंक ब्रीच है, एक्सटेंडेड लेग के साथ फ्रैंक ब्रीच है तो हमें पिनाट्स मैनुअर यूज करना पड़ेगा। एंड दिस पिनाट्स मैनुअर में यू कैन सी हम क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर vaginally इंट्रोड्यूस वी आर इंट्रोड्यूसिंग एंड पोप्लिटियल फोसा तक लेके जा रहा है। पोप्लिटियल फोसा में एक थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो क्या होगा, अबडक्शन ऑफ द लेग्स हो जाएगा एंड हम एंकल को फुट को ऐसा पकड़ेंगे एंड नीचे की ओर पुल डाउन करेंगे। ओके, दैट इज पिनाट्स मैनुअर। Next is the shoulder arrest. Shoulder arrest mostly it happens due to the extension of arms. तो एक method है that is Losset maneuver. In Losset maneuver, we are supposed to it is mostly ज़्यादा यूज़ करते हैं because it is very applicable. anesthesia की ज़रूरत नहीं है and जो भी हम कर रहे हैं वो externally कर रहे हैं। Okay, तो इसमें हमें क्या करना है, the baby will be hanging like this. तो हमें femora pelvic grip ऐसा पकड़ना है बेबी को, ऐसे पकड़ के लैटरल फ्लेक्शन मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ेगा बेबी को एंड हम 180 डिग्री में रोटेट करेंगे। याद रखने का कि बैक ऑफ द बेबी शुड बी एंटीरियर। ओके, बैक आगे हमें दिखना, बैक ऊपर होना चाहिए। ओके, 180 डिग्री रोटेट किया तो पोस्टीरियर शोल्डर कहाँ पे आ गया, बेबी खर्च के नीचे आ गया है, तो थोड़ा तो क्या हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा। थोड़ा हुक डाउन करने से डिलीवरी हो जाएगा। नाउ फिर उल्टा रिवर्स हम अगेन 180 डिग्री डिलीवर्ट करेंगे। याद रखने का कि बैक शुड बी एंटीरियर। देन व्हाट हैपेंस, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद एंटीरियर शोल्डर प्यूबिक आर्च के नीचे आ जाएगा एंड देन हुक डाउन करने से एंटीरियर शोल्डर विल बी elevated. Okay, that is about the Lawset manual. So we studied about today in this class. We studied about the management, especially external cephalic version, the main thing ECB. Okay, if it is possible then only contraindication है तो we will not move forward for the ECV, then cesarean section कर सकते हैं, नहीं तो forceps delivery करना पड़ेगा। okay, हेड डिलीवरी करने के लिए। देन मैनेजमेंट असिस्टेंट ब्रिज डिलीवरी है। असिस्टेंट ब्रिज डिलीवरी के लिए बटक्स के डिलीवरी के लिए नी एब्डक्शन, शोल्डर के डिलीवरी के लिए हुकिंग डाउन एल्बो, हेड के डिलीवरी के लिए तीन मेथड है, बॉन्स मार्शल मेथड, फोर्सेस डिलीवरी एंड आला फ्लेक्शन एंड शोल्डर, दैट इज मॉरिशियस मिली वेट टेक्निक। ओके, ये यूज करते हैं हेड के डिलीवरी के लिए। कॉम्प्लिकेटेड ब्रीच डिलीवरी है अगर वर्टेक्स का डिलीवरी के लिए ग्रोइन ट्रैक्शन एंड पिनाट्स मैनुअल, शोल्डर के लिए लॉसेट मैनुअल, मोस्ट कॉमन लॉसेट मैनुअल, इसलिए दैट्स व्हाई आई स्पेसिफाइड लॉसेट मैनुअल ओनली। ओके, देन अगर हेड का डिलीवरी के लिए सेम थिंग वी कैन यूज आला फ्लेक्शन एंड शोल्डर ट्रैक्शन,
and this is not that much used. So that's why I just discussed about the Mauritius Millie weight check. Okay, so I think you got some idea about the breech presentation and breech delivery. If you have, again, I am repeating, if you have any doubts, you just call me or just message me. I am ready to explain you in detail. If individually, if you want any classes, please let me know, and I will. I am very happy to take class. Okay, thank you.